Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6 and the name of our unit is, quickly tell me, our country, Pakistan. Very good. Today I will deliver its third lecture, and in today's lecture we will talk about that all countries have a flag. जैसे पाकिस्तान का एक फ्लैग है, इसी तरह जितने भी दूसरे मुल्क हैं लाइक इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, एवरी कंट्री हैज अ फ्लैग. ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैग के बारे में भी बात करेंगे. So my dear students, before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the question very carefully and then answer. So my dear students, what is the meaning of green color in our flag? It represents majority Muslims. Very good. And what is the meaning of white color in our flag? It represents minorities, non-Muslims, क्योंकि ये कम होता है. And what is the meaning of star in our flag? It represents light and knowledge. And what is the meaning of crescent in our flag? It represents progress. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly have a look at what we will learn today. In today's lecture, students will be able to recognize that all countries have a flag. जितने भी मुल्क हैं उन तमाम ममालिक का एक झंडा होता है. जैसे पाकिस्तान का एक झंडा है, हर मुल्क का अपना अलग अलग झंडा होता है, अलग कलर का होता है, उस पे अलग सिंबल्स होते हैं. So we will discuss that. Okay, my dear students, let's quickly look at the pre-reading questions. Quickly tell me that do you know the importance of a flag for a country? एक कंट्री के लिए उसके झंडे की अहमियत के बारे में आपको पता है? 14 अगस्त पे लगाते हैं आप झंडा. चलें, लेट्स हैव अ लुक एक झंडे की क्या अहमियत होती है. वी विल डिस्कस दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, flags of the countries. I request you all to please open page number 45 in your GK1 books. Very good. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Flags of other countries. Flags of other countries. As our country has a flag, similarly, other countries have their flags too. As our country has a flag, similarly, other countries have their flags too. जिस तरह पाकिस्तान का एक झंडा है, इसी तरह जो बाकी ममालिक हैं, बाकी कंट्रीज हैं, उनके भी झंडे हैं. Just you can see that this is the flag of सऊदी अरब. ठीक है, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जहां लोग हज करने भी जाते हैं और ये उनका फ्लैग है. सो जब भी आप इस फ्लैग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग सऊदी अरेबिया. नाउ दिस फ्लैग, look it very carefully, this is the flag of Turkey. Flag of Turkey. So जब भी आप ये फ्लैग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now there are some other flags too. This is the flag of China. Flag of China. This is the flag of Malaysia. Malaysia. So इनको आप केयरफुली देखें तो जब भी आप इन फ्लैग्स को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री की बात हो रही है. Now this flag, flag of Afghanistan. Afghanistan. Now this flag, flag of United Kingdom. United Kingdom. The United Kingdom UK का फ्लैग है. Okay? So these are different flags of different countries. इसी तरह से बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके पास भी उनके झंडे हैं. So फ्लैग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ आपको कुछ क्रिकेट टीम के मेंबर्स नजर आ रहे हैं और जब भी ये ग्राउंड में होते हैं तो आप इनको इनकी क्रिकेट किट से पहचान लेते हैं. Why? Because Pakistan green color is there, then India, Sri Lanka and this is Australia. So आप जब भी किसी कंट्री को देखते हैं उसकी किट देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन से कंट्री का प्लेयर है. Similarly, whenever the people go in Olympics, तो वहाँ वो ये नहीं बताते हाथ खड़ा करके कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ जोर जोर से बोल के. They just have their flag with them. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, different countries are representing themselves with the help of their flags. सो फ्लैग की इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्लैग हमारी आइडेंटिटी है.
आप कहीं भी अगर अपना फ्लैग दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू पाकिस्तान. इसी तरह द सेकेंड पिक्चर, दिस इज द फ्लैग ऑफ अमेरिका. सो हेयर वी कैन से कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की टीम है. इसी तरीके से डिफरेंट फ्लैग्स डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उनकी आइडेंटिटी होते हैं. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you will move forward towards page number 47, picture reading, and you will match the country with the correct flag. Okay, so match the name of the country with its flag. So let's quickly do it. Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, United Kingdom. So this is how you will complete it in your books. Use pencil and scale for drawing the lines. I hope everybody has done it. Now let's move forward towards the evaluation. So my dear students, let's quickly have a look at the questions. Why every country has a flag? Because it is the identity. It is the representation of that country. क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारी identity है, हमें represent करता है पूरी दुनिया में. So that is why every country has a flag. So now is the time for homework. For homework, you will do home activity number 2. So what you will do is write the name of person who designed the national flag of Pakistan. Take help of your parents. So किसने पाकिस्तान का flag design किया था? It was designed by सैयद आमिरुद्दीन किदवाई. ठीक है, तो आपको मैंने भी हेल्प आउट कर लिया. आप अपने पेरेंट्स से भी जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. सो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं एक दफ़ा दोबारा गूगल के ऊपर, दैट हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. सो सैयद आमिरुद्दीन किदवाई, ही डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. Okay, a very important information that I have shared. Now the wrap up. So today we have learned that every country has a flag, and a flag is the identity of a country. So I hope you have enjoyed today's lecture, and now you all know that and you can recognize कि हर country जो है उसके पास उनका एक अलग झंडा होता है जो कि उनको represent करता है, उनकी identity होता है. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.